रिलीजियस थिंकर स्टार्ट होते हैं, तीन लोगों का नाम है। एक का नाम है शाह वलीउल्लाह, दूसरे हैं सैयद अहमद शहीद बरेलवी, तीसरे हैं हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक है जी। पहले जरा क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा। जल्दी से लिखिएगा जरा। क्वेश्चन बैंक नंबर 1, what were the achievements of Shah Waliullah? 4 marks. What were the achievements of Shah Waliullah? Achievements of Shah Waliullah. Second, जी 4 marks. What were the achievements of Shah Waliullah? 4 marks. ऑनलाइन हजरात आपको समझ आ रही है ना? जी सर। ओके। नंबर 2, why did Shah Waliullah translate Quran into Persian? Shah Waliullah translate Quran into Persian. आजा जल्दी से। Shah Waliullah translate Quran into Persian. Number 3, जी why did 7 marks, 7 marks. Why से शुरू होने वाला हर क्वेश्चन 7 मार्क्स का है। Why did Shah Waliullah wish to revive Islam in the subcontinent? Why did Shah Waliullah wish to revive Islam in the subcontinent? To revive Islam in the subcontinent. Why was Shah Waliullah the most influential personality of subcontinent? The most influential personality of subcontinent. 7 marks. Personality of subcontinent. 7 marks. अब बात करते हैं सबकॉन्टिनेंट। Why was Shah Waliullah the most influential personality of subcontinent? 7 marks. ठीक है जी। अब बात करेंगे सैयद अहमद शहीद बरेलवी के, उनके क्वेश्चन लिखें। What were the achievements of Sayyid Ahmad Shahid Barelvi? Achievements of Sayyid Ahmad Shahid Barelvi. 4 marks. Achievements of Sayyid Ahmad Shahid Barelvi. जी जी। What were the achievements of Sayyid Ahmad Shahid Barelvi? Second, what was Battle of Balakot? What was Battle of Balakot? Battle of Balakot. Court. GKOT court. Balakot. Why did Sayyid Ahmad Shahid Barelvi start jihad movement? Why did Sayyid Ahmad Shahid Barelvi start jihad movement? 7 marks. Sayyid Ahmad Shahid Barelvi start jihad movement. 7 marks. हाजी शरीयतुल्लाह पे आ गए जी। What was Faraisi movement? What was Faraisi movement? What was Faraisi movement? F-A-R-A-I-Z-I. What was Faraisi movement? 4 marks. Who was Mia Mohsinuddin / Daddu Mia? Mia Mohsinuddin / Daddu Mia जी। बंगाली लैंग्वेज में दद्दू मियाँ बूढ़े आदमी को कहते थे, तो मियाँ मोहसिनुद्दीन या उनका नाम था दद्दू मियाँ। यस, हु वाले क्वेश्चन 4 होते हैं। Why did Haji Shariatullah start Faraisi movement? 7 marks. Why did Haji Shariatullah start
Friesi movement. Now 14 marks question. Sayyid Haji Shah Waliullah Haji Sharaitullah started Friesi movement. Why did Haji Sharaitullah start Friesi movement? 7 marks. 14 marks. Shah Waliullah slash Haji Sharaitullah slash Sayyid Ahmad Shahid Brelvi was the most influential personality of subcontinent. Shah Waliullah slash Haji Shariatullah slash Sayyid Ahmad Shahid Brelvi was the most influential personality of subcontinent. Personality of subcontinent. Do you agree or not? Give reasons for your answer. मैं होता तो मैंने एग्जाम में लिखा था no, I don't agree. All of them were not at all important. जी, यानी कि जो स्लैश का मतलब है कोई भी एक आएगा आपको क्वेश्चन में, कोई भी एक आएगा, यानी कि शाह वलीउल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद शहीद बरेलवी, लिखना आपको तीनों के बारे में पड़ेगा। बात समझ आई? अब वापस आते हैं बैक टू द स्टेज 1। शाह वलीउल्लाह स्लैश हाजी शरीयतुल्लाह स्लैश सैयद अहमद शहीद बरेलवी was the most influential personality of subcontinent. Do you agree or not? Give reasons for your answer. Now coming to the question number 1. What were the achievements of Shah Waliullah? जी लिखें जी। वैसे तो मैंने आपको हैंड आउट जो दिया है ना, उसके अंदर हाजी शाह वलीउल्लाह के बारे में मैंने वर्क के नाम से लिखा होगा। हाँ लिखा हुआ है। अब सर मैं आपको बताऊंगा, आप लिखें, बेशक जरूर लिखें, शौक से लिखें। ये वर्क और अचीवमेंट्स ऑफ शाह वलीउल्लाह के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा बताऊंगा जो इसमें नहीं लिखा होगा, ठीक है? इसलिए लिखें जी, चलें आंसर लिखवा लें, लिख लें जी आप। व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ शाह वलीउल्लाह? नंबर 1, Shah Waliullah translated Quran into Persian. Translated Quran into Persian so that more and more people could read. More people of subcontinent could read directly the message of God and would not be playing in the hands of pseudo scholars. Playing in the hands of pseudo scholars. pseudo pseudo कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सूडो कोड नहीं पढ़ा हुआ। सूडो कहते हैं सुपरफिशियल नॉलेज वाला बंदा। तो शाह वलीउल्लाह विश के जो उस जमाने के इंडियंस थे, दे शुड नॉट बी प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ सूडो स्कॉलर्स, क्योंकि मुस्लिम्स वर, आगे लिखें, मुस्लिम्स वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टेरियनिज्म, शियाज एंड सुन्नीज, ब्रैकेट में लिखें, Muslims were divided on the basis of sectarianism, bracket में लिखें, Shias and Sunnis, sectarianism. Sectarianism on the basis of Shias and Sunnis
नहीं नहीं, he wanted to bridge the gap and unite the Muslims under one flag, to bridge the gaps, unite Muslims under one flag. He wrote about 51 books. He wrote about 51 books. He wrote about 51 books in order to help Muslims into their day-to-day affairs, especially day-to-day affairs, especially related to their economic life, affairs, day-to-day affairs, especially related to their economic life. The most important of them were Hijjatul Balagha and Azalatul Akhafa. Hijjatul Balagha, Tul Balagha. And Azalatul Akhafa. He also helped Mughals. He also Azalatul Akhafa. He also helped Mughals by inviting the contemporary Muslim rulers, He also helped Mughals by inviting contemporary Muslim rulers. He also helped Mughals by inviting contemporary Muslim rulers from the neighboring countries to come and help Mughals against Marathas. Mughals against Marathas. Paratha na likhna. Marathas. And even defeated them by participating in the Battle of Panipat 1761. 1761 में पहली बैटल ऑफ पानीपत की जंग में ये जीते। पानीपत की पहली बैटल में ये शामिल थे 1761 जी। जी भाई बुक में लिखा हुआ है, हाँ वो भी काफी है। हाँ अच्छा ये जरा समझिएगा। अब बेसिकली हुआ क्या था, शाह वलीउल्लाह वाज अ पर्सन जो कि एक स्कॉलर थे, रिलीजियस स्कॉलर थे। मोस्ट ऑफ द पीपल नो हिम बिकॉज ऑफ हिज वहाबीइज्म, because he was the one who introduced Wahhabism in the subcontinent. Now what is Wahhabism? इस बात में हम इस बहस में नहीं पढ़ेंगे कि क्या है Wahhabism, but yes the one वो जो रफ़ा दैन करते थे और जो नमाज इस्लाम पढ़ते थे और जब कुरान को पर्शियन में ट्रांसलेट किया तो उस वक्त के स्कॉलर्स को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि इंडिया के अंदर तो पीरी फकीरी की लाइन थी। You know, peers used to have grandeur, or they were the ones who were the honor of everything. So Quran ki translation they used to describe to the people because people were unaware
ठीक है. So because they were not able to read Quran. अरबिक तो समझते थे बट ट्रांसलेशन नहीं समझ पाते थे. तो when for the first time he translated Quran into Persian, so this was something which was not liked by the religious scholars at that time. उनके लिए तो मसला हो गया ना, अब उनके पास कौन जाएगा, कौन पूछेगा उनसे. People started getting information by themselves. ठीक है. तो ये बुरा लगा. That is why शाह वलीउल्लाह को जो उस जमाने के scholars थे, they used to regard him a very bad person, but he wasn't actually. So the second thing he did was he tried to unite Muslims by writing books on the caliphs. 4 caliph पे उन्होंने books लिखी जो कि agreeable थी दोनों fractions के अंदर, Shias and Sunnis के बीच में. And he wanted to bridge the gaps between Shias and Sunnis because at that time scholars जो थे वो Shias और Sunnis को लड़ा रहे थे. And Muslims were getting weak. ठीक है. तो ये भी एक प्रॉब्लम था. और मुसलमान जो मुगल एम्पर था उस जमाने में, उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि he because of his luxurious lifestyle, because of his so many luxuries जो उसकी क्रिएट हो गई थी, उसकी वजह से he gotten weak and so weak that from Nadir Shah from Persia he came and blown everything into smithereens. उसने उनको लूट लिया. उसके बाद जो भी आता था वो उनको लूट लेता था और मुगल्स का तमाशा बना हुआ था. तो मुगल्स का जो डिक्लाइन था वो बहुत स्टीप चल रहा था और मुगलों में नाम आ रहे थे मोहम्मद शाह जैसे, जिनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, द वन हु यूज्ड टू ड्रिंक, यूज्ड टू लिसन सॉन्ग्स विद इन द कोर्ट एंड दैट वाज ऑल. ये वो लोग थे. औरंगजेब तो खतरनाक आदमी था ना, उसने आते साथ ही कहा ये क्या करते हो. जी जी. औरंगजेब इससे पहले की बात है, ये औरंगजेब के बाद की बातें हैं. औरंगजेब के मरने के बाद इस तरह के फनकार पैदा हुए थे. वो कहते हैं ना कि पुराने वक्त की माएँ जो थी वो तस्बीहात पढ़ती थी, तो बच्चे जो पैदा होते थे वो इमाम हुसैन बनते थे, इमाम हसन बनते थे, नाम भी काम भी. अब माएँ ड्रामे देखती हैं तो बच्चे फनकार बनते हैं. ठीक है. तो फनकार उस जमाने में मोहम्मद शाह रंगीला एक फनकार था जिसकी वजह से मुगल्स का डिक्लाइन बहुत स्टीप हो गया. खैर मैं उसकी डिटेल में नहीं जा सकता. The worst history of Mughals, worst history. Anyways, अच्छा, why did Shah Waliullah translate Quran into Persian? I'm just going through quickly. सिर्फ reasons बताऊंगा क्योंकि आपको सब कुछ notes में मिला हुआ है, लिखा हुआ है. So we will write down reasons only so that you must know कि what were the reasons. जो कि अभी मैं कुछ बता चुका हूँ, कुछ मैं इस 4 मार्क के क्वेश्चन के अंदर जिस्ट दे चुका हूँ. पहली, number 1, he translated Quran into Persian because more and more people could read the message of God directly, and especially the non-Muslims. लिखें, he translated Quran into Persian so that more and more people could read Quran directly. जी अयान कुछ कह रहे हो? सर ये पॉइंट्स में है या पूरा आंसर है? बेटे जो आंसर मिला हुआ है ना आपको वो पूरा आंसर है. उसमें मैंने उसके ऊपर पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं. वैसे तो मैंने ऊपर पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं. ठीक है. और नीचे आंसर भी लिखा हुआ है पूरा, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं. नंबर 2, he translated Quran into Persian so that more and more Muslims could read the message of God directly, and especially the non-Muslims. ये आपके पॉइंट में नहीं लिखा हुआ और कहीं भी नहीं मिलेगा. And especially for the non-Muslims to read the message of God, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स के लिए भी तो बुक थी ना, वो भी तो पढ़ सकते थे ना फिर कि इसमें लिखा गया हुआ है इस किताब में. सेकंड जी, he wanted to inculcate in Muslims unity, inculcate in Muslims the unity, inculcate, INCUL, inject, डालना. He wanted to inculcate, मुसलमानों में डालना चाहते थे, the concept of unity and jihad, which they had forgotten and became weak, which they had forgotten and had become weak.
jihad, the concept of unity and jihad, without which they had forgotten and had become weak and even lost control on the major territories they lost control of the major territories. He wanted to purify Islam. He wanted to purify Islam from the Hindu practices. He wanted to purify Islam from the Hindu practices which had corrupted the Islamic moral values, जी, moral values. Next, इसी में आगे एक और रीजन जी, moral values. He wanted to restore the glory of the Muslims, the lost glory of the Muslims. लिख लो. He wanted to restore the lost glory of the Muslims. I hope कि अब आपके लिए आसान हो जाएगा. These are the lines जिनको आपको एक्सप्लेन करना है. आपके लिए यहाँ पे हैंड आउट में सब कुछ लिखा हुआ है. ठीक हो गया? कर लेंगे क्या? लिखवा दूं पूरा 7 मार्क क्वेश्चन? सही है? ओके. इसी तरह अब जरा समझना है. कंक्लूजन 7 मार्क्स में नहीं करते. उल्लू कल बताया था कि 7 मार्क क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड विल एंड दैट्स ऑल. नो वो कोई उसका कंक्लूजन वगैरह नहीं लिखेंगे इसमें. टीचिंग ये कहाँ आ गया इधर? As Arabic was the Quran was initially कोई वर्ड को मसला हो गया. बैठ जा अपनी चेयर पे. कहाँ था ये? किधर है? यहाँ पर कहीं. ये था. Able to understand it and practice Islam teachings to bring back the British. चलो बंदे के उधर it's the error, word and error. Anyways, चलो human error, sorry. बस तुम लोगों को मौका चाहिए भाई. अब जरा जल्दी में लिख रहा होता हूँ तो क्या कुछ भी गलती हो जाती है. हाँ, मैं डिक्शनरी, मुझे लगता है मेरे जो डिक्शनरी है उसको ऑफ करना पड़ेगा. वो अजीब वर्ड ऐड होते हैं. ओके, अच्छा जी. असल में ना मैंने कुछ चीजें काटी थी, बड़ी डिटेल में था, और कुछ चीजें ऐड की थी. ओके चलो बस हो जाता है. बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं. एनीवे, अच्छा जी, अब बात करते हैं आगे. रिवाइवल की बात करें या इंपॉर्टेंस की बात करें. क्वेश्चन आता है, व्हाई वाज शाह वलीउल्लाह द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी ऑफ सबकॉन्टिनेंट? व्हाई वाज शाह वलीउल्लाह द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी? अब ये समझना है कि सारे ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, लेकिन ट्रांसलेट में यू विल फोकस मोर ओवर किस पे बात कर रहे होंगे आप? मुस्लिम्स पे, उनकी यूनिटी पे, उनकी रेस्टोरेशन पे, ठीक है, उनकी जो पर्सनल जो डिविएशंस थी उन पे, उनकी मॉरल वैल्यूज पे जो करप्ट हो रही थी हिंदू प्रैक्टिसेस की वजह से. लेकिन जब बात करते हैं रिवाइवल की, ठीक है, तो उसमें रिवाइवल में आप क्या लिखेंगे कि व्हाई वाज ही द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी? तो इसमें 3 लोगों को कंपेयर करेंगे. सैयद अहमद शहीद बरेलवी, हाजी शरीयतुल्लाह और शाह वलीउल्लाह. जब भी आएगा कि व्हाई वाज शाह वलीउल्लाह द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी,
तो तीनों के कंपैरिजन में लिखेंगे, यानी कि एक पैराग्राफ शाह वलीउल्लाह का, दूसरा सैयद अहमद शहीद बरेलवी का, तीसरा हाजी शरीयतुल्लाह का। हाँ 7 मार्क्स का, तो तीनों में आप लिखेंगे उनका, ठीक है। तो कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे, वो बताता हूँ अभी वो कैसे करेंगे उसको। इसी तरह इधर ही मैंने आपको एक हैंडआउट में कंपैरिजन भी ड्रॉ करके दिया होगा, है ना? ठीक है, इसका मतलब एरर्स बहुत ज्यादा है इसमें। चलो खैर इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात एक और आ जाता है, why did Shah Waliullah wish to revive Islam in the subcontinent? It's the same like why did he want to translate Quran into Persian? क्योंकि revive और translate एक ही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। यहां मैंने ये देखो, ये जो इंपॉर्टेंस लिखी हुई है ना, ये पैराग्राफ भी आप ऐड कर सकते हैं। वैसे तो ये सारी बातें वही हैं, रेपिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है बार बार। अच्छा जी, अब आते हैं सैयद अहमद शहीद बरेलवी पे। लिखें जी सैयद अहमद शहीद बरेलवी। क्या अभी बताया तो है जी, तीनों के 4 मार्क्स क्वेश्चन लिखेंगे उसमें। अभी बताता हूँ, सबर सबर, पहले ही अपनी कबर ढूंढने लग गया है, अभी मर तो जा। अच्छा हाँ है, अभी बताया है कि ट्रांसलेट वाला और रिवाइवल वाला एक ही है। हाँ, सैयद अहमद शहीद बरेलवी, व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ सैयद अहमद शहीद बरेलवी? Being a man of action, Sayyid Ahmad Shahid Brelvi, after performing pilgrimage toward India, and gathered his like-minded men. पिलग्रिमेज आगे, पिलग्रिमेज के आगे, हज के बाद आगे उमरा होता है, फिर उसके बाद टेंट करवानी पड़ती है, फिर इहराम उतार देते हैं, फिर ईद, एक दफा शुरू होता है। मैं खुद, मुझे याद नहीं रहा मैंने बोलना क्या था। अब बताओ क्या लिखा है भाई? अच्छा बेटे, मैं खुद से बोल रहा होता हूँ तो toward India and gathered like-minded men, and gathered like-minded men, in order to challenge the authority of the despotic regime, REGIME, despotic regime of Ranjit Singh Kana, काना लिखना नहीं है, रंजीत सिंह, वो एक कहावत है ना, कहता ये श्रीलंका के लोग बड़े काले होते हैं। तो मैं श्रीलंका गया तो फिर मुझे वहां ना हब्स बहुत होता है, तो मुझे एहसास हुआ वहां जाके, एक लतीफा मुझे याद आ गया, आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। वहां मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, मैं कहा आज मुझे समझ आई ये अर्जुना, राणा, टुंगा और ये सारे काले काले क्यों होते हैं। वो हुआ ये कि दरवाजे पे दस्तक हुई, तो कहता दरवाजे पे दस्तक हुई तो बाहर एक बहुत ही काला बंदा आया, और जैसे ही बंदा बाहर आया तो मैंने उसको कहा यार काले में भेजी। तो कहता जो बाहर बंदा आया था वो बहुत काला था। वो दोबारा अंदर गया, बाहर आके कहता काला घर नहीं का। बात बताने की इतना काला आया और उसने भी आ गया क्या काला घर नहीं का। तो श्रीलंका जाके मुझे एहसास हुआ कि काले हाँ, काना वन आंख निकल गई थी उसकी। बड़ा जंगचू था, बड़ा वॉरियर था। कभी फारिग टाइम हुआ तो आपको बताऊंगा रणजीत सिंह के भी किस्से। अच्छा नेक्स्ट लिखें, एंड चैलेंज द डिस्पोटिक regime of the
Ranjit Singh, who accepted his challenge, and thereon Sayyid Ahmad Shahid Brelvi was able to, initiate jihad movement in subcontinent. Initiate jihad movement in subcontinent. He also wanted to, अब ये वाली दो बातें जो है ना, ये दोनों आप तीनों में ऐड करेंगे, ये वाले पॉइंट याद रखने. He also wanted to revive the Muslim culture and value system which got corrupted due to the influence of Hindus and Sikhs. He also wanted to restore the lost glory of the Muslims. Lost glory of the Muslims. This was the first ever movement. This was the first ever movement of subcontinent which was not for the throne. Ever movement of subcontinent which was not for the throne, but for the sake of Allah. For the throne, but for the sake of Allah and well-being of Muslims. बस अब आते हैं, why did Sayyid Ahmad Shahid Brelvi start jihad movement? बताऊंगा अभी तीनों कंप्लीट कर लेंगे ना, फिर लिखूंगा. मैं समझता हूं तेरा पॉइंट बेटे. अच्छा स्कूजी, तुम दोनों ने इकट्ठे नहीं बैठना कल से, बात में जाके चुप. अच्छा लिखें जी, why did Sayyid Ahmad Shahid Brelvi start jihad movement? अच्छा बैटल ऑफ बालाकोट, चलो जी बैटल ऑफ बालाकोट लिखें जल्दी से. 4 mark question. What was Battle of Balakot? What was Battle of Balakot? In 1830, after getting defeat from the Ranjit Singh, Sayyid Ahmad Shahid Brelvi and his 600 men. Ahmad Shahid Brelvi and his 600 men took refuge in the midst of the middle of the Balakot mountains, and started getting taxes from the local Nawabs, collecting taxes from the local Nawabs in order to generate a huge army to defeat and challenge Ranjit Singh. Local Nawabs to defeat and challenge
Ranjit Singh. Local Nawabs did not like the idea of paying taxes. Therefore, they managed to guide therefore they managed to guide the forces of Ranjit Singh, to the hideout of Sayyid Ahmad Shahid Brelvi. they managed to के बाद क्या कह रहे हो अयान? they managed to के बाद क्या है हाँ, they were They managed managed to guide the forces of Ranjit Singh to the hideout of Sayyid Ahmad Shahid Brelvi. So in a surprise attack of Ranjit Singh with his massive force, in 1831, near Balakot, Sayyid Ahmad Shahid Brelvi, along with his 600 men, got martyred. This is how this great movement got ended.